हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुतिका टेक। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है। अब हम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स जैसे बुलियन अलजेब्रा और कार्नोट मैप्स, एसओपी, पीओएस, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। कुछ भी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं। लॉजिक गेट्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत यूज़ होता है। जब हम सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं तब हमारे लॉजिक गेट्स का यूज़ आता है। Basically, logic gates are used extensively in designing computer circuits. A gate is an electronic device which takes one or more than one input and gives only one output. ठीक है, मतलब इनपुट के सिग्नल्स हमारे पास वन भी हो सकता है, वन से ज़्यादा हो सकता है, बट आउटपुट हमेशा एक होता है। ये तो हो गया एक लॉजिक गेट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स आर दे आर नोन एज प्राइमरी गेट्स। ठीक है, सो प्राइमरी मीन्स द वेरी बेसिक वंस, primary gates. And the second category is known as secondary gates. Secondary gates. Primary gates are basically of three types: and, or, and not. Secondary gates are of four types: NAND gate, NAND, NAND gate, NOR gate, NOR, XOR gate, XOR, and XNOR gate. Okay, these are the two categories of gates: primary gate and secondary gates. एक इंट्रोडक्शन हो चुका है. Today we will start with primary gates, and in tomorrow's lecture we will see what are secondary gates. Okay, let's start. First primary gate is known as AND gate. Okay, what is the symbol used for AND gate? The symbol used for AND gate is the symbol used is the dot operator. ये हमने बूलियन अलजेब्रा में भी देखा था कि एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका गेट कैसे होता है? गेट इसका ऐसे है, वी हैव टू इनपुट्स एक्स एंड वाई, and the output is x dot y. ठीक है, एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन एक डी फॉर्म के गेट में होता है. ट्रुथ टेबल कैसा होगा? ट्रुथ टेबल आई थिंक सबको आता होगा जिसने बूलियन अलजेब्रा करा हुआ होगा, बट एक बार मैं फिर भी बना देती हूँ ताकि लोगों को, कुछ लोगों का रिवीजन हो जाए और जिनको नहीं आता उनको पता चल जाएगी एंड का ट्रुथ टेबल कैसा होता है. इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए बी. आउटपुट इज a dot b. When there are two variables, we can have four combination of inputs: 0 0 0 1 1 0 1 1. And what is the output of AND? The output of AND is 1 only when both the inputs are 1. Both the inputs are 1, output is 1. Only one of the input is 1, output is 0. None of the input is 1, the output is still 0. Okay,
So in AND gate, the output is 1 only when all the inputs are 1, otherwise the output is 0. Okay. Now we also have a Venn diagram for it. So the Venn diagram is like this. आई होप कुछ लोगों को पता होगा वेन डायग्राम कैसे होता है, मैथ्स में भी कराया जाता है. सो लेट्स से वी हैव two variables x and y, x, y, and so we are only including the part that is common to both are 1. So this is the Venn diagram of and. So okay, so let's do a quick revision. The symbol of and is dot. The logic gate is created by using a D-shaped gate. The truth table is like something like this, which I've just drawn, which says that in AND gate the output is 1 only when all the inputs are 1, otherwise the output is 0. And we also have a Venn diagram for it. So this is the basics for AND gate, and this is sufficient. Okay. Now let's move to OR gate. OR gate. So what is the symbol for OR gate? What is the symbol of OR? We had also done this in Boolean algebra. The symbol of OR is plus. Okay. What does the logic gate looks like? The logic gate is something like this. Something like this. Okay. We will have two inputs, x, y. Output will be x plus y. What is the truth table? The truth table has two inputs, x, y, and the output is x plus y. When there are two variables, the combination of inputs are 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So what is the output? In OR gate, the output is 0 only when all the inputs are 0. Only when all the inputs are 0. That means if any one of the input is 1, the output will be 1. Okay. Now let's move to the Venn diagram. The Venn diagram is something like this. This is the Venn diagram of OR gate. Okay. Now let's move to the last primary gate, that is NOT. NOT गेट को एक और नाम से बोला जाता है, उसका नाम होता है इन्वर्टर गेट. आई जस्ट टेल यू कि उसको इन्वर्टर गेट क्यों बोलते हैं. So the symbol is this, or the symbol is
this. That is, the symbol is A bar or the symbol is A apostrophe. Okay. So what is the logic gate looks like? The logic gate is something like this. There is one input X and the output is X bar. Okay. What is the truth table? We have one input X, the output is X bar. When the input is 1, the output, when the input is 0, the output is 1. When the input is 1, the output is 0. सो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? It is called as inverter gate because it inverts the state of input signal. It inverts the state of input signal, मतलब input signal का जो भी वैल्यू है उसका ऑपोजिट कर देता है. So if input is 1, the output is 0. If input is 0, the output is 1. It inverts the state. Okay? And now we have the Venn diagram. The Venn diagram is something like this. Okay? क्योंकि हमने बाहर पे कलर वो इसलिए किया क्योंकि उसका स्टेट ऑपोजिट होता है. सो अगर हमारे पास ये एक्स है सर्कल में, तो आउटपुट क्या होगा जो उस सर्कल के बाहर है. सो एक्स बार, दैट्स वाई. ओके. सो आज के लेक्चर में इतना ही था. सो आज के लेक्चर में हमने बात किया है व्हाट आर लॉजिक गेट्स, हम लॉजिक गेट्स क्यों यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, एंड the types of logic gates, the categories of logic gates. Basically, there are two categories, primary and secondary. Today, we looked at what are primary gates. There are of three types, and, or, not. Tomorrow, we will look at what are secondary gates. There are of four types, NAND, NOR, XOR, and XNOR. Okay. So I hope you like this lecture, and please subscribe and share this video as much as you can. This really helps my channel grow. And have a good day. Let me know your doubts in the comment section. Thank you. Bye bye.